eye is the organ which helps us to see. Eyeball is present in the bony socket which is called orbit. Orbit attaches to eyeball via six muscles which is rectus superior, inferior, external that is lateral, internal which is medial, oblique superior and inferior. These muscles are supplied by POW. POW means stands for pathetic, A for abducens and O for oculomotor nerves. Diameter of eyeball is 2.5 centimeter and formed by three layers. Three layers are outer fibrous layer, middle vascular layer, and outermost is the nervous layer retina. So outer fibrous layer is made up of white collagen fiber, posterior 1/6 sclera, which provides strength and shape, and that is the white part of the eye. Anterior 1/6 sclera, which is made up of non-keratinized stratified squamous epithelium called conjunctiva of eye, which prevents the infection and which is thin. So anterior 1/6 sclera is thin and transparent and through which the light enters, and it is non-vascular. Middle portion is the middle vascular layer made up of blood vessels posterior to third choroid, which absorbs the extra light and forms a dark region which is dark blue in color. Middle portion formed by the ciliary body. Ciliary portion is made up of ciliary muscles and suspended ligaments. Ciliary muscles have the part to accommodate lens, and the suspended ligaments hold that crystalline lens. So when the object is placed near, the lens is short and thick. Short and thick, and the nervous system playing role is sympathetic, and suspended ligaments are relaxed and ciliary muscles are contracted. When the object is placed far, it is elongated and thin, ciliary muscles are relaxed, suspended ligaments contract, and the nervous system involved is parasympathetic. Anterior portion is called iris, which is made up of muscles and blood vessels and has central aperture called pupil. Iris provides the color to our eyes, and the pigment in the blood decides the color of that. When the light is dim, pupil dilates and iris constricts, and this nervous system is sympathetic. When the bright light falls, pupil constricts, iris is relaxed, and the nervous system involved is the parasympathetic. कार्निवोर्स की आंखें रात में चमकने लगती हैं, भाई हमको पता है कि चमकती हैं, लेकिन क्यों चमकती हैं? क्योंकि उनके पास ग्वानिन क्रिस्टल्स होती हैं जो कि लाइट को जो है, रोशनी को जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात है, अगर बंदा, और एक पॉइंट हो, अगर बंदा एल्बिनिज्म हो रखा है बंदे को, तो उसकी आंखों का रंग गुलाबी हो जाएगा, यानी पिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड कलर रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर अगर कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन होती है तो हम उसे बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट आसान होता है क्योंकि नॉन वेस्कुलर है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन होने का कोई चांस नहीं रहता। फिर आते हैं हमारे रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ रेटिनॉल एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एंड ऑप्सिन और स्कोटॉप्सिन का मतलब होता है प्रोटीन्स। सो बर्ड्स जो कि इनएक्टिव होती हैं रात में, उनके पास रोड्स कम होंगे। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे रोड्स क्या होती है। फिर आउल्स, बैट्स और अदर नॉक्टर्नल एनिमल्स जैसे कि कॉकरोच वगैरह, उनके अंदर रोड्स जो मैक्सिमम होती हैं। फिर आता है हमारा इनर मोस्ट लेयर विच इज़ रेटिना। रेटिना जो है एंड्स एंटीरियरली एट अ पॉइंट जस्ट बिफोर द ciliary body, and the point of ending is called ora serrata, which is made up of three layers: the external, or the outside, medial, or the inner. So external is made up of, or outside is made up of photoreceptor cells consisting of the rods and cones. Middle consists of bipolar cells, and inner consists of ganglionic cells. Portion just opposite to the lens is called macula lutea, which is yellow spot and has central depression or pit where, which is called foria centralis. This is the point for maximum visual acuity, or we can say maximum resolution, and there is only one layer of photoreceptor cells, which is cones. Only cones are present at macula lutea. So and then comes a point above the posterior pole. Point above the posterior poles without photoreceptor cells and is called blind spot, through which the blood vessels exit. Then comes the photoreceptor cells. Photoreceptor cells are those which receive the light. So light is received by this layer of photoreceptor cells.
There are two types of photoreceptor cells. First is the rods and second is the cone. Rods are about 12 million, 120 million, sorry. Rods are about 120 million, which are light sensitive, photopigmented rhodopsin, and enables us to see in dim light. That is, the vision provided by it is the nocturnal, scotopic, twilight, or night vision. Second comes the cones. Cones are about 6 million, which are color sensitive and has pigmented cells of iodopsin. So pigment present is iodopsin. There are three types of this: erythropsin, chloropsin, and synopsin. Erythropsin is red, chloropsin is green, and synopsin is blue. Equal stimulation leads to or produces the white color, and different stimulation leads us to see different colors. So Kala motia. What is kala motia? Kala motia is glaucoma and safed motia is motiabid or cataract. Now comes the mechanism of vision. विजन में mechanism में क्या है? लाइट पहले एंटर करेगी कॉर्निया में रिफ्रैक्शन से, फिर लेंस में एंटर करेगी रिफ्रैक्शन से, फिर सबसे पहले फॉल्स फर्स्टली ऑन द पिगमेंटेड फोटोरिसेप्टर सेल्स. उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिससे कि साइट डिसोसिएशन हो जाती है ऑप्सिन और रेटिनॉल की. उसके बाद लीडिंग टू चेंजेस इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, यानी हम कहें कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी का मतलब है ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स. उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. वो एक्शन पोटेंशियल हमारा बाइपोलर से पास करेगा, फिर बाइपोलर सेल से हमारा गैंग्लियोनिक सेल्स में जाएगा. गैंग्लियोनिक सेल्स के बाद जाने के बाद वो लीडिंग टू दी ऑप्टिक नर्व. गैंग्लियोनिक सेल्स जो है एक्शन पोटेंशियल लीड करेगा ऑप्टिक नर्व तक, विच exits through the blind spot and reaches the occipital lobe. वो occipital lobe तक रीच कर जाएगा. फिर हमारे चैम्बर्स ऑफ आई के चैम्बर्स हमारे इसलिए होते हैं क्योंकि लेंस जो हमारा डिफ्रेंशिएट होकर बीच में आ जाता है. इससे दो चैम्बर्स बनते हैं हमारे. एक होता है हमारा एक्वस चैम्बर और दूसरा होता है हमारा विट्रस चैम्बर. एक्वस चैम्बर इज वाटरी चैम्बर मेड अप ऑफ वाटरी सब्सटेंस एंड द composition is same as that of plasma. Secreted by the ciliary body throughout the lifespan, provides the nourishment to the cornea, and it is replenished through the Sacculum canal. Sacculum canal से replenish हो जाता है. Whereas vitreous chamber is the jelly-like substance, mucopolysaccharide का बना यानी hyaluronic acid, keratin sulfate and chondroitin से, secreted by the retina through या फिर during the embryonic development, and it provides the internal shape. So internal shape of the eye is provided by the vitreous chamber and it never exits.